Good morning, class. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. In the previous class, we discussed about sex determination in butterfly, moth, honeybee, etc. And today we'll discuss about sex-linked inheritance. Okay. So, sex-linked inheritance पढ़िबा पूर्वरु हमकु किछि इन्फॉर्मेशन जानिबा दरकार इनहेरिटेंस कोन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कोन से विषय हम डिस्कस करिबा so sex linked inheritance means what actually in men there are two sex chromosomes X and Y. Okay, in male the two sex chromosomes are X only, X and X chromosome ही थाए female case रे, but male case रे कौन थाए X and Y chromosome थाए. But आमे जहाँ को sex chromosome कहूचु X chromosome and Y chromosome ସେଥିରେ खाली sex linked characters नुहे ସେଥିରେ किछि somatic characteristics भी थाए. ओके आमे कोन जानि छे सेक्स क्रोमोसोम मींस जे टेस्टिस एंड ओवरी को फॉर्मेशन करूतबो ओके ताकू ही आमे कहू छे सेक्स क्रोमोसोम एमिति भाबुतलो बट एक्चुअली सेमिति नुह सेक्स क्रोमोसोम रे कोन थाए सोमाटिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करूतबा जीन मध्ये लिंक हेकी था ओके आ सही सोमाटिक कैरेक्टर्स जते बेले पेरेंट्स थारु ऑफस्प्रिंग पाखकू इनहेरिट हेकी आसे आमे ताकू कहबा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस माउथरे रिपीट करू आमे देखो इटी डायग्राम रे there are two chromosomes X and Y chromosome. Okay, this is your X chromosome and this is your Y chromosome. Okay, so in the X and Y chromosome or in the sex chromosomes not only the sex characters are there but also somatic characters are also present in the X chromosome. Okay, ସେଥିରେ ଖାଲି sex gene ही न थाए ସେଥିରେ somatic gene भी थाए और सही सोमाटिक जीन जेतेबेले कोन हेबो मैटिंग हेबो पेरेंट्स रो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन हला बेले पेरेंट्स थारु किछि सोमाटिक कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम देकी आसी थाए ओके आ सही इनहेरिटेंस को हम कोन कहिबा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोली ओके तो हम सही विषय रे डिस्कस करिबा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस केमिति कोन आसे आ हमरो सिलेबस रे जहा अछि से विषय रे डिस्कस so sex chromosomes of some animals and men besides having genes for sex character also possess gene for non-sexual characters जोटा कि मैं अबे कहउतली तम मानको जे sex chromosome men रे दुई टाइप रो थाए गोटे XX in female and XY in male ओके तो सेथिरे खाली सेक्स कैरेक्टर को एक्सप्रेस करूथबा जीन न थाए आ कोन थाए नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करूथबा जीन मध्ये सेथरे प्रेजेंस थाए जाको हमें सोमाटिक कैरेक्टर्स को एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स जे कि जर्मिनल सेल को तयारी करे टेस्टिस एंड ओवरी को तयारी करे ताको कोन कहबा सेक्स कैरेक्टर जीन कहबा आ जो हमर बॉडी रो डेवलपमेंट हैंड नोज ब्रेन हेयर आई टीथ ए सब को जे फॉर्मेशन करूची हम तो कोन कहबा सोमाटिक कैरेक्टर्स कहबा तो गोटे सेक्स क्रोमोसोम रे especially in X chromosome not in Y chromosome because X chromosome is not slightly larger than Y chromosome X chromosome ता सब बेले Y chromosome रो बड़ा हेता और X chromosome रे बहुत गुडाए सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स थाए हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स काहा को कहबा जो सोमाटिक कैरेक्टर्स गुडा को X chromosome भितर थिबो हम ताको कहबा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर ओके तो एथुर तमे कोन जानिलो जे सेक्स क्रोमोसोम रे खाली सेक्स कैरेक्टर को एक्सप्रेस करूथबा जीन न थाए सोमाटिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करूथबा वाला जीन मध्ये थाए ओके and these genes for non-sexual characters being linked with sex chromosomes are carried with them from one generation to another ये जो नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर गोटा को सेक्स क्रोमोसोम रे थाए से गोटा को गोटिए जनरेशन रो आ गोटिए जनरेशन पेरेंट्स थारो ऑफस्प्रिंग पाखको आसी थाए ओके क्रॉसिंग ओवर करिवा में मैटिंग जते बेले हबो फीमेल एंड मेल क्रॉस करिवा ओके सेतरो कोना पर ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन हबो तो जते बेले ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होची जो सेक्स क्रोमोसोम रे नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स कोडा कथिला नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करथुवा जीन थिला से जीन कोडा को पेरेंट्स थारो ऑफस्प्रिंग पाखको आसी थाए ओके आ सही लिंक नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स रो इनहेरिटेंस को हम कोन कहबा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोली कहबा लेट्स सी
Such non-sexual characters linked with sex chromosomes are called sex-linked characters or traits. Gene for such characters are called sex-linked genes, and the inheritance of such character is called as sex-linked inheritance. बुझा पड़ला समस्तंको एई जो सेक्स क्रोमोसोम भितरे नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स गुड़ाक अच्छी आमे ताकू कहबा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स बिकॉज दे आर लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम्स एंड यू नो दैट व्हाट आर द सेक्स एक्स एंड वाई आर द सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम रे जेहेतु किछि जीन्स अछंती जो गुड़ाक नॉन सोमैटिक कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करन नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स सॉरी सोमैटिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करन माने हमर बॉडी रो किछि डेवलपमेंट जे कोनोसी बॉडी रो एक्सेप्ट सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस एंड ओवरी को छाडी की आउ किछि कैरेक्टर को भी समान एक्सप्रेस करथि और हमें सेगुडा को काहे कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स वा सेक्स लिंक्ड जीन बोली कहबा बिकॉज़ सेई जीन गुडा को को क्रोमोसोम रे अछंती सेक्स क्रोमोसोम रे अछंती एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम है अच्छा ओके तोन सेगुडा को कहबा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स और सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स और sex linked genes okay and the inheritance of such character from one generation to other जो सेक्स कैरेक्टर गुडा को एक्स क्रोमोसोम रे थिला जते बेले फादर थारो बा पेरेंट्स मान को थारो ऑफस्प्रिंग पाक को आसे किछि नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर और सोमैटिक कैरेक्टर इनहेरिट के आसे इनहेरिट की आस जाए और सही प्रोसेस को हम कोन कहबा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मींस व्हाट किछि जीन्स पेरेंट्स पाखरु ऑफस्प्रिंग पाखको आसी थाए ओके ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और ड्यूरिंग मैटिंग ओके सही प्रोसेस को कहबा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नेक्स्ट एटी तो मन देखिबो हम दुईटी क्रोमोसोम को एटी मेंशन करछि डायग्राम रे दिस इज योर एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज योर वाई क्रोमोसोम okay there are you can see here SRI means what SRY means what सेक्स डिटरमिनेशन जीन टा SRI जीन को आसे ताकू से कोन करिवो टेस्टिस को डेवलप करिवार हेल्प करे ओके जोटा कि वाई क्रोमोसोम रे अछि एंड एक्स क्रोमोसोम रे यू कैन सी ऑक्यूलर अल्बिनिज्म ओके एंड एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी हेमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस एथरे बहुत गुडा जीन अछि जो गुडा को नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स गुडा लाइक योर कलर ब्लाइंडनेस गोटे आखिरो डिजीज ता ओके ए जीन जतले ट्रांसमिट हबो देन ऑफस्प्रिंग को भी कलर ब्लाइंडनेस होबार चांसेस होछि कोन को हम आगे डिस्कस कर तो एठी तो माने क्लैरिटी करते मिलिला तो मानकु जे एक्स क्रोमोसोम रे खाली सेक्स जीन ही नहीं आ कोन अछि रे सोमैटिक जीन्स भी किछि अछि like your color blindness hemophilia severe combined immunodeficiency these are the genes that causes some genetic disorders okay color blindness got a genetic disorder hemophilia got a genetic disorder so x chromosome re other than sex gene there are some somatic genes are also present and that genes when inherit from parents to offspring that process is called as sex linked inheritance a gene got यही जीन गुडा को हमें कहें कि सेक्स लिंक्ड जीन कहबा बिकॉज़ दे आर प्रेजेंट इन द सेक्स क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम okay that's why we are calling these genes sex linked genes and the concept of sex linked inheritance was introduced by T.H. Morgan in 1910 in some books it is 1909 in Drosophila melanogaster that what is Drosophila melanogaster Drosophila melanogaster kahar scientific name zoological name kahar re fruits fly ro जो छोट छोट जेमि मसा गुडा को पचि जाइतिबो फ्रूट्स गुडा को सेते बसी थान सेमान को हमें फ्रूट्स फ्लाई बोली कहू आ तार जूलॉजिकल नेम होची ड्रोसोफिला मेला तो टीएच मॉर्गन 1910 रे जेतेबेले एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करथिले ऑन ड्रोसोफिला मेला तो से ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विषय रे फर्स्ट कोन करथिले प्रपोज करथिले ओके so let's see how the sex linked genes inherit from parents to offspring okay we put your types of sex linked in characters there are three types actually there are three types of sex linked characters one is sex linked traits another one is y linked traits and incomplete in तीन टाइप रो थाए हमें गोटे गोटे डिस्कस करिबा जो जीन देखो डायएंड्रिक सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड ट्रेट का कहबा क्रोमोसोम जीन्स थिबो
somatic character to express କରୁଥିବା genes ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା diandric sex linked or X linked traits. So genes for these characters are located on non-homologous segment of X chromosome. Alleles of these genes do not occur on Y chromosome. ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ସେ diandric sex linked or X linked traits କାହାକୁ କହିବା ଯଦି କିଛି genes, as you can see the diagram here, there are some genes like color blindness, hemophilia, severe combined immunodeficiency to express କରୁଥିବା gene that are not present in Y chromosome. They are present in X chromosome. Okay, तो जो gene गुड़ाक X chromosome रे थिबो ताको ଆମେ कौन कहबा X linked traits or X linked genes बोली diandric sex linked genes बोली कहबा. Okay, so the genes that are present on the non-homologous segment of X chromosome but not in Y chromosome, they are called as X linked traits. जो somatic gene गुड़ाक X chromosome रे थिबो but Y chromosome रे नथिबो ताको ଆମେ कहबा diandric sex linked or X linked traits बोली कहबा because they are okay. Then genes transfer from father to his daughter and from his daughter to her son in a two generation. This is known as crisscross inheritance, and this is very very important for you because এই বিষୟରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ discuss କରିବା. ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, genes of characters are transformed from father to his daughter. तापर daughter to तार son को F2 generation. जदि एई टाइप रो जीन इनहेरिट होची ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଇନହେରିଟାନ୍ସ କୁ କଣ କହିବା କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ଇନହେରିଟାନ୍ସ. ଲେଟ୍ସ सी an example. सपोज ଏଇଠି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ X କ୍ରୋମୋଜୋମ ରେ ହିଁ ଯୋଉ ଜିନ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା X linked traits or sex linked diandric sex linked gene ବୋଲି କହିବା. ତ ଆମେ ଯଦି ଏଠି एग्जांपल नबा मोडे क्रॉस देखाए तम मानकु देखो एठी ଗୋଟେ एग्जांपल नबा एठी नॉर्मल मैन गोटे नै से नॉर्मल कथ छाडी दिया हम आगु पढियो से विषय रे. तो एठी XY जीन अछि मेल पई एंड XX जीन XX क्रोमोसोम अछि फीमेल पई. ओके, जेतोले क्रॉस करेबा देन कोन होछि देखो ए जो मेल रे गोटे X क्रोमोसोम अछि ए X क्रोमोसोम कोन होछि डॉटर को जाउछि. देखो यू कैन सी द X क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल मान फादर डॉटर थारू सब ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଇନହେରିଟାନ୍ସ କୁ କଣ କହିବା କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ଇନହେରିଟାନ୍ସ. ଏଟା ହଉଛି F1 ଜେନେରେସନ. या पर जदि ଆମେ F2 ଜେନେରେସନ କରିବା ଏଇଠି ମୁଁ କଣ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ଇନହେରିଟାନ୍ସ କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି. ତ କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ରେ କଣ ହୁଏ फादर थारू डॉटर को जीन इनहेरिट ହେଇଥାଏ ତାପରେ डॉटर थारू सन को ग्रांड सन को. ओके, जदि जीन इनहेरिट ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोली कहै. ओके, so criss cross inheritance means what? When the genes of such characters are transformed from father to his daughter and from his daughter to her son in F2 generation is called as criss cross inheritance. First father to daughter, daughter to son को माने grandson को. Okay, daughter to her son माने father पे कौन है से grandson है. father daughter daughter to grandson. Okay, जदि गोटिए जीन फादर थारू डॉटर एंड डॉटर थारू ग्रांडसन को कौन होची इनहेरिट होची हमें एई टाइप रो इनहेरिटेंस को कौन कहबा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोली कहबा. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बिकॉज़ इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. समटाइम इट कम्स इन शॉर्ट नोट्स इन योर बोर्ड एग्जाम. ओके, जब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पचारिबो मिले genes of X chromosome are transferred from father to his daughter and from his daughter to her son in F2 generation. And this type of inheritance is called as criss cross inheritance. तापर गोटे क्रॉस करके देखिबा को पड़िबो criss cross inheritance. Next, as the genes for most X-linked characters are located in X chromosome, they are called X-linked characters. Example: color blindness, hemophilia, and eye color. ओके, जेहेतु तुम माने एठी देखिलो जे एई जो डायनेमिक सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम रे all the somatic genes or maximum somatic genes are present in X chromosome, that is hemophilia, color blindness, and severe combined immunodeficiency. These all are the examples of some diseases, and the genes that are present in
X chromosome only, not in the Y chromosome. That's why this gene is also called as X-linked gene. Okay. So X-linked character, they are called as X-linked character because they are present in the X chromosome. Most of the X-linked characters are located in X chromosome. That's why they are called as X-linked characters. And the examples of X-linked genes or characters are the genes are responsible for color blindness, genes responsible for hemophilia, and genes are responsible for eye color of Drosophila. पढ़िबानी eye color of Drosophila. Next class eye color of Drosophila पढ़िबा. हमें आज sex linked inheritance in man विषय रे पढ़िबा. Okay. So किसी doubts रहुची कि ना clarity आसुची रे? ସାର୍ ଆମେ ଏକାଥରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଉ ଡ୍ରୋସୋଫିଲା ବିଷୟରେ ପଢୁଛୁ କି ସାର୍? हाँ एथिरे हम तम सिलेबस रे ह्यूमन और ड्रोसोफिला अछि. हम आज ह्यूमन विषय रे पढ़िबा. ह्यूमन रे भी सब गोटा केस कंप्लीट होनी जति होबो देखिबा. ओके. किसी डाउट्स अछि की? नहीं तो चलिबा. नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ traits हम तो पढ़ले X linked trait. Next second type of trait, that is your Hollandric or Y linked traits. Here the genes that are present in non-homologous segment of Y chromosome. Okay, which genes Y chromosome रे भी थांती, but most of these genes are present in X chromosome. Some of the genes that are present in Y chromosomes are TDF, testis determining factor, SRY gene. Okay, SRY and hypothyroidism. এই টাইপ অফ জিন গুড়াক কোটি অছন্তি Y chromosome রে এটি মেনশন ନାହିଁ. এটি দুইটা মেনশন ଅଛି SRY and sperm development. এই দুইটা জিন র না গুড়াক এমানে কোন করନ୍ତି male sex, because you know that in sex determination Y is the main chromosome that determine the sex. Y chromosome जोठी थिबो male, जोठी नथिबो female. So Y ही determine करे human beings रे sex female हेबो कि male हेबो. जोठी Y present हो ताको मेल कहिबा, जो Y absent थिबो ताको हमें फीमेल कहिबा. ओके. सो Y chromosome रे SRY sex determination and AZF sperm development gene को छेकी आउ किछि जीन भी अछंती जो गुडा को सोमैटिक कैरेक्टर्स पर रेस्पोंसिबल. आ सेही जीन को हमें कोन कहिबा Y linked traits बोली कहिबा. Some genes or genes for these characters are located on non-homologous segment of Y chromosome. Such characters are called as Y linked characters. They are not present in the X chromosome. They are present in the Y chromosome. ये जीन गुड़ा को कोड थिबे Y chromosome रे थिबे. तो हम कोन कहू Y linked traits or Hollandric traits बोली कहू. Okay. So these characters are inherited directly from the father to son, but never to the daughter. Because you know that जोठी Y chromosome थिबो से केबे daughter हे परिबोनी, female हे परिबो कि रे. जोठी Y chromosome रहिला एटा कोन हेबो X chromosome. Y chromosome जोठी रहिला से ऑप्शन कोन हेबो male ही हेबो. Because female ପାଇଁ X and X chromosome are responsible, male ପାଇଁ Y chromosome responsible. तो जदि हम एठी कोन पढिले Y linked traits विषय पढुचे. सो Y chromosome रु केबे जीन डॉटर पाखकु जीवो ना. फादर पाखरे XY क्रोमोसोम थाए, डॉटर पाखकु जो क्रोमोसोम जाए X क्रोमोसोम जाए, Y क्रोमोसोम जाएनी. तो Y क्रोमोसोम का पाखकु जीवो सन पाखकु जीवो. ओके, मेल पाखकु जाई. सो एटा नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हला. काहे कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का को कहबा जते बेले फादर पाखरु जीन डॉटर को जीवो एंड डॉटर थारो ग्रैंडसन पाखकु जीवो, सेते बेले हम कोन कहबा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. बट हियर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नुह, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. Okay, बुझा पड़ला समस्तन को Y linked traits. Then the examples of Y linked genes that are present in Y chromosome are hypertrichosis of ear in men. Hypertrichosis trichosis is the condition actually ear पिना थाए कानरे के जनकर चुटी उठी. ओके, सेही केस को हम कोन कहबा hypertrichosis बोली कहबा. Okay, so hypertrichosis of ear in men means excessive hairs in the pinna. Ear pinna रे कोन थाए चुटी उठी थाए, सेगुडा कोन कहबा सेही कंडीशन को hypertrichosis. And these genes are present in Y chromosome only, not in X chromosome. Y chromosome रे थाए. Okay, and TDF or testis determining factor, which is the smallest gene present in Y chromosome. तो किछि जीन अबे हम कोन देखुचे, किछि जीन X chromosome रे थिला सोमैटिक कैरेक्टर्स गुडा को,
ताको हम कोन कहिछु X linked genes और X linked traits किछि genes Y linked Y chromosome रे अछि ताको हम कोन कहिले Y linked traits बोली कहले and let's see another type of traits that is XY linked traits किछि genes common थांती X chromosome रे भी थांती and Y chromosome रे भी थांती ताको कोन कहबा हमें incompletely sex linked or XY linked traits बोली कहबा. So genes for these characters are located on non-homologous segment of X and Y chromosome. So X chromosome रे किछि genes थांती and Y chromosome रे किछि genes थांती तेणु हम कोन कहबा ताको XY linked traits बोली कहबा. So I think X linked traits कोन Y linked traits कोन XY linked traits कोन and criss cross inheritance कोन सब गुडा को क्लैरिटी आस्थिबो. Criss cross inheritance is very very important. Criss cross रे कोन हेबो मेल टू फीमेल फीमेल थारु मेल क्रिस क्रॉस हेकी जीवो माने फादर थारु डॉटर डॉटर थारु ग्रैंडसन बट नॉन क्रिस क्रॉस रे कोन हेबो फादर थारु डायरेक्ट सन ताको की जीवो. ओके नेक्स्ट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मेन रे केमिति जो हम पढिले सोमैटिक कैरेक्टर्स गुडा को जो गुडा को एक्स क्रोमोसोम रे थांती ओके से माने केमिति इनहेरिट होंती टू द ऑफस्प्रिंग से विषय में डिस्कस करिवा. Okay, so there are actually 56 numbers of somatic genes are present in sex chromosome, but in your syllabus there are two important genes that is color blindness and hemophilia. एगुडा को बहुत टाइम एग्जाम रे आसीछि आ या व्यतीत हम आ किछि पढियोनी आ बाकी सब हम हायर स्टडी रे पढिबो. सो आमे जो जीन विषय रे पढिबा अछि कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफिलिया ऊपर. Okay, there are 56 number of somatic genes that are present in sex chromosome, but in your syllabus there are two types of traits that are color blindness and hemophilia, and that color blindness genes and hemophilia genes, how they transmit from parents to offspring. Let's discuss. So first condition one is color blindness. Color blindness माने कोन जतबेले गोटे पर्सन डिस्टिंग्विश करि परिबे. ओके बहुत गुडा कलर थी एटा रेड एटा ब्लू ग्रीन ब्लैक व्हाइट एमिति किछि जदि डिस्टिंग्विश करि परिबनी आमे त कोन कहबा द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस डिजीज. एटा गोटे डिजीज ता क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ता जदि पेरेंट्स पाकर थाए ऑफस्प्रिंग को हेताए इनहेरिट हेताए. ओके क्रोमोसोमल डिजीज गुडा को सब गुडा की इनहेरिटेड डिजीज गुडा हेरिडिटरी ट्रांसमिशन जदि पेरेंट्स को हेतिबो ऑफस्प्रिंग को हेबो केमिति कोन हेबो चांसेस तार थाए 50% कोड थाए 40 कोन थाए हम से विषय डिस्कस. So the persons they are unable to distinguish certain colors are called as color blind. किछि कलर को से माने डिस्टिंग्विश करि परिबे जेमति रेड ग्रीन भितरे डिस्टिंग्विश करि परिबेनी ताको रेड भी ग्रीन भली देखा जाउथो ग्रीन भी ग्रीन भली देखा जाउथो से डिस्टिंग्विश करि परिबो नाही. Okay, so there are several types of color blindness are known, but the most common one is red green color blindness, and it has been described by Horner in 1876. 1876 रे Horner biologist name. Okay, से कौन करिथिले कलर ब्लाइंडनेस को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को फर्स्ट डिस्कवर करिथिले जे एथरे कोन हेबो रेड ग्रीन भितरे केते पर्सन्स थांती जो मानन को कलर ब्लाइंडनेस डिजीज हेतिबो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस डिजीज हेतिबो से माने रेड आ ग्रीन कलर भितरे डिस्टिंग्विश करि परिबे जे कोउटा रेड कलर आ कोउटा ग्रीन कलर. Okay, so the red blindness is called as protanopia and the green blindness is called as deuteranopia and blue blindness is called as tritanopia. Okay, ए तीनटा टर्म को तुमको मन रखियो पड़िबो 1 मार्क क्वेश्चन रे आसी थाए 1 मार्क क्वेश्चन रे ए तीनोटी आसी थाए जदि रेड ब्लाइंडनेस हेतिबो माने जदि रेड कलर को जदि गोटे पर्सन चिनि पर नथबो सेही कंडीशन हम कहबा प्रोटानोपिया. प्रोटानोपिया कहबा जतेबेले गोटे पर्सन जदि रेड कलर डिस्टिंग्विश करि परबो जदि पर्सन ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करि परिबोनी देन ताको हम कोन कहबा ड्यूटेरानोपिया. हम कहबा ड्यूटेरानोपिया. आ जदि गोटे पर्सन ब्लू कलर को डिस्टिंग्विश करि परिबोनी तब कोन कहबा हमें ट्राइटानोपिया. तो ए तीनटा टर्म को तुम मान के पड़िबो एग्जाम रासी थाए. ओके तो कलर ब्लाइंडनेस कोन बुझा पड़ला तुम मान को जदि गोटे पर्सन किछि सर्टेन कलर को नॉट ऑल कलर सर्टेन कलर को से डिस्टिंग्विश करि परिबो ना जेमिता हम एग्जांपल ले रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस रे कोन हेबो गोटे पर्सन इधर रेड को डिस्टिंग्विश करि परनथबो किबा ग्रीन को डिस्टिंग्विश करि परु नथबो.
एबे हम तो कोन कहबा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहबा and that red green color blindness was first described by Turner in 1876. देखो एक्चुअली कहीं हुए हम जो कलर ब्लाइंडनेस डिस्कस कले मैं स्टार मार्क लिखी तो हमें जदि चाहिबो देन यू मे राइट इन योर नोटबुक जदि किसी मुझे एक्चुअली एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देछि जे कहीं की हुए कलर ब्लाइंडनेस तमे नोट रे लिखि पारो न लिखि पारो सेटा तुम ऊपर डिपेंड करूछि बट या विषय जानिबा जरूरी सेति पे मु एठी मेंशन कर सो एक्स क्रोमोसोम पोजेस ए नॉर्मल जीन which control the formation of color sensitive cells in the retina and you all know that on the structure of our eye रे कौन थाए जो गुडा को कलर डिटरमाइन करंती कोन सेल एंड रेड सेल्स आर प्रेजेंट बहुत गुडा पिगमेंटेड सेल थाए हमर रेटिना रे ताको हमें रेड रॉड सेल आरओडी रॉड सेल एंड कोन सेल बोली कोइ तो सेल रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स ओके तो जते बेले ए जो एक्स क्रोमोसोम पोजेस ए नॉर्मल जीन ए जीन कोडी थाए एक्स क्रोमोसोम रे थाए हम देखुतिले डायग्राम रे कि जो कलर ब्लाइंडनेस पई जो जीन रेस्पोंसिबल से कोठी थाए एक्स क्रोमोसोम रे थाए ओके जते बेले ए जीन पेरेंट्स थारु ऑफस्प्रिंग पाखो को आसीबो बा ए जीन रो काम कोन ये जते सब कलर सेंसिटिव सेल अछि रेटिना रे से गोडा को ये कंट्रोल करे कलर सेंसिटिव माने जो रेटिना रे जो पिगमेंट गोडा को बा जो सेल गोडा को कलर को डिस्टिंग्विश करि पारंती ये रेड कलर ये ग्रीन कलर एगुडा को जो माने डिस्टिंग्विश करि पारंती से गुडा को कंट्रोल करे ए जीन ओके इट्स रिसेसिव एलीली फेल्स टू डू इट्स जॉब प्रॉपर्ली एंड रिजल्ट इन कलर जेतेबेले ये ट्रांसमिट हुए सॉरी ट्रांसमिट तो नुहे इनहेरिट हुए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ओके पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग को जेतेबेले इनहेरिट हुए और जो रिसेसिव यू नो दैट डोमिनेंट एलीलीज आर देयर रिसेसिव एलीलीज आर देयर जेमिति कि एठी हमें नबा कलर ब्लाइंड जदि नबा एक्ससी इज द रिसेसिव एलीली डोमिनेंट किए नॉर्मल टा डोमिनेंट तो रिसेसिव एलीली कोन करि पारेनी आउ कंट्रोल करि पारेनी जो सेल गुडा को रेटिना रे थिले सेमान को जे कंट्रोल करूतला कलर डिस्टिंग्विश करिबारे कलर सेंसिटिव सेल गुडा को जे कंट्रोल करूतला से आउ कंट्रोल करि जहा फल रे पर्सन कलर ब्लाइंडनेस हे जाय से कलर को डिस्टिंग्विश करि परिबो बिकॉज़ से जीन कौन है गला रिसेसिव है गला और तुम मान जानी छो ऑलवेज डोमिनेंट जीन डोमिनेट करे रिसेसिव जीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन जे एक्सप्रेस करिवो ताको डोमिनेंट कहिबा जे एक्सप्रेस न करि कि रहिबो ताको कोन कहिबा रिसेसिव जीन कहिबा तो जेहेतु यार रिसेसिव एलीली माने दुईटा जाको जते बेले सपोज हमें कैपिटल एक्स नै छे ओके स्मॉल एक्स रीड होची रिसेसिव जदि एठी मेंशन करिबे कैपिटल एक्स फॉर डोमिनेंट जीन ओके एंड स्मॉल एक्स फॉर रिसेसिव जीन जेतेबेले स्मॉल एक्स पड़े आसीबो माने ये रिसेसिव हे गला दुईटा जाको तो सेते बेले आ किछि कंट्रोल हे परिबोनी यार जो सेंसिटिव सेल रेटिना रे थाए से गुडा को कंट्रोल हे परिबो नाही जा फल रे कोन हेबो पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस हे ओके तो हमें बे पढिबा कलर ब्लाइंडनेस को लिंक्ड जीन गुडा को केते टाइप रो माने कोन हेले कोन हेबो को जीन थिले ताको नॉर्मल कहिबा केते बेले कैरियर कहिबा केते बेले डिजीज कहिबा केते बेले नॉर्मल मेल कहिबा से विषय डिस्कस करबा ओके so color blindness is linked to the X chromosome and the sex are of the following types according to the presence or absence of the genes for the color blindness the males देखो एठी एगुडा मन रखिबे वेरी इंपोर्टेंट फीमेल नॉर्मल केते बेले कहिबा जते बेले XX क्रोमोसोम थिबो ओके कैरियर केते बेले कहिबा जते बेले गोटिए XC थिबो आ गोटा X थिबो ओके डिजीज केते बेले कहिबा दुईटा जाको जते बेले कलर ब्लाइंडनेस जीन थिबो दुईटा जाको एक्स क्रोमोसोम XC होची फीमेल सब एटा तो मन थियो तो मान करो जे XX होची फीमेल एंड XY होची मेल ओके XX टा होची नॉर्मल फीमेल जतले कोनोसी जदी जीन नथिबो कोथिरे को जीन नथिबो रे कलर ब्लाइंडनेस जीन जदी टोटली एब्सेंट अछि देन नॉर्मल हेबो जतेबेले गोटिए रे रहिबो से कोन हिजिबो कैरियर जतेबेले दुईटा रे रहिजिबो से कोन हिजिबो डिजीज माने ताको कलर ब्लाइंडनेस हे कैरियर गुडा को नॉर्मल था बट कैरियर नॉर्मल से माने कलर डिस्टिंग्विश करि परिबे बट जतेबेले से माने कोन थरे क्रॉस हे कि ऑफस्प्रिंग जन्म हेबे से मानको पई प्रॉब्लम कैरियर ओके एंड मेल रे XY नॉर्मल एंड XCY कोन हेबो रे डिजीज
देखो एठी गोटे टर्म आसला कैरियर कैरियर सब बेले फीमेल ही हेबो मेल केबे भी हेबो नाही कैरियर सब बेले कोन हेबो रे फीमेल ही हेबो मेल केबे भी हेबो नाही बिकॉज़ मेल रे गोटिए ही एक्स क्रोमोसोम अछि आ सेही एक्स क्रोमोसोम रे ही कोन थाए कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्रेस करूथबा जीन थाए तो जते बेले गोटे मेल रे जो एक्स क्रोमोसोम अछि सेतरे जदी कलर ब्लाइंडनेस जीन अछि देन ताको हम कहबा डिजीज्ड मेल बोली ही कहबा कैरियर मेल कहबा ना बट जते बेले फीमेल केस रे गोटिए एक्ससी अछि माने गोटिए एक्स क्रोमोसोम रे कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन अछि आ गोटाए रे नाही याको हम सेते बेले कैरियर कहबा बिकॉज़ एठी ये रिसेसिव हे जिवो एक्ससी जो अछि ये रिसेसिव हे जिवो ये डोमिनेंट तो एई केस रे फीमेल टा नॉर्मल रही ताको कलर ब्लाइंडनेस हेबो नाही बट इट इज द कैरियर ऑफ कलर ये फर्दर जते बेले मैटिंग करिवो बा क्रॉसिंग ओवर जते बेले हबो क्रॉस हेबो सेते बेले तारो ऑफस्प्रिंग मानकु चांसेस अछि कलर ब्लाइंड हेबार बट एबे पर ए जो एक्ससी एक्स एको कैरियर कहिबा ये नॉर्मल नॉट डिजीज्ड केते बेले हेबो जते बेले फीमेल रे दुईटा जक एक्स क्रोमोसोम रे कोन थिबो कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्रेस करतुबा जीन थिबो ताकू सेते बेले डिजीज्ड कहिबा कैरियर केते बेले कहिबा जते बेले गोटिए ही एक्स क्रोमोसोम रे कलर ब्लाइंडनेस जीन थिबो आ गोटिए एक्स क्रोमोसोम रे नथिबो आ एटा भी मन रखिबो पड़ियो तम मानकु जे फीमेल ही कैरियर हबो मेल केबे कैरियर हेबो बिकॉज़ मेल रे गोटिए ही एक्स क्रोमोसोम अछि आ सेही एक्स क्रोमोसोम जदी कलर ब्लाइंडनेस जीन अछि सेथरे ताको हम डिजीज्ड मेल बोली कहिबा ओके तो बुझा पड़िला समस्त को ए पांचटा टर्म मन रहिला एक्स एक्स केले नॉर्मल फीमेल एक्ससी एक्स केले कैरियर फीमेल एंड एक्ससी एक्ससी जदी थिबो डिजीज्ड फीमेल जदी नॉर्मल मेल जदी कहिबा हम एक्स वाई एंड डिजीज्ड फीमेल जदी डिजीज्ड मेल जदी कहिबा एक्स सी वाई ए पांचटा टर्म को तुमको मन रखबा को पड़ियो फीमेल केते बेले नॉर्मल हबो फीमेल केते बेले कैरियर हबो फीमेल केते बेले डिजीज्ड हबो एंड नॉर्मल मेल एंड डिजीज्ड मेल मन रखबा पड़ियो तो हम बे डिस्कस करछे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मेन तने करी फर्स्ट केस हमें देखिबा जते बेले गोटे नॉर्मल मेल मैरिज टू ए कलर ब्लाइंड फीमेल नॉर्मल मेल माने हम एठी कोन देखिले नॉर्मल मेल रो कैरियोटाइप कोन हेबो XY नॉर्मल मेल मैरिज टू ए कलर ब्लाइंड फीमेल रो कोन हेबो रे कैरियोटाइप XC डिजीज्ड फीमेल XC को हम जते बेले क्रॉस करेबा का सहित गोटे नॉर्मल मेल सहित देन कोन हेबा हम देखिबा केमिदी जो सेक्स लिंक्ड जीन अछि इनहेरिट केमिदी होचे हम देखिबा बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तो सेक्स लिंक्ड जीन माने जानिलो तुम माने जो सोमैटिक जीन गुडा को जदी सेक्स क्रोमोसोम रे थांती ताको हम कहिबा सेक्स लिंक्ड जीन माने जे हम फर्स्ट स्लाइड डिस्कस करले जे सेक्स क्रोमोसोम रे खाली सेक्स जीन न थांती किछि सोमैटिक जीन भी थांती आ सेही सोमैटिक जीन को हम सेक्स लिंक्ड जीन कहिबा बिकॉज़ दे आर प्रेजेंट इन सेक्स क्रोमोसोम तो आमे बे डिस्कस करिबा जे सेक्स लिंक्ड जीन गुडा को केमिदी इनहेरिट होची फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ओके सो लेट्स सी एठी हम कोन करले क्रॉस करूचे नॉर्मल मेल ये होची नॉर्मल मेल ओके एंड ये होची कलर ब्लाइंड फीमेल तो कलर ब्लाइंड वोमेन सहित जतले नॉर्मल मेन क्रॉस हेबो देन एठु कोन हबो कोरे XC गोटे बाहरिबो एंड एठु XC एथिरो X एंड Y तो जते बेले XC X सहित कंबाइन हबो कोन हेबो XC X ओके एंड जते बेले XC ए X सहित कंबाइन हबो कोन हेबो XC X ओके तापर XC जते बेले Y सहित कंबाइन हबो कोन हेबो XCY एंड जते बेले आ गोटे XC Y सहित कंबाइन हबो कोन हेबो XCY सो एठी त मन देखु जे होची कैरियोटाइप ऑफ द वोमेन एंड कैरियोटाइप ऑफ नॉर्मल मैन ये डिजीज्ड वोमेन नॉर्मल मैन डिजीज्ड वोमेन रो कैरियोटाइप कोन थिला XC तो जते बेले गैमेट फॉर्मेशन हबो हाफ ही जाय क्रोमोसोम नंबर जेमिति हमें सेक्स डिटरमिनेशन रे करूथिले जहां भी क्रोमोसोम नंबर थिबो गैमेट रे हाफ ही जाय फीमेल बॉडी रे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थाए इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जदी हम डिस्कस करिबा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर तो सेथु कोन हे जिवो ओव्यूम रे 23 ही जिवो कि नै हाफ ही जिवो क्रोमोसोम गुडा को तुम मान पढिचो ऊ जेनेसिस भी जेतु ह्यूमन रिप्रोडक्शन सरिलानी
सो ओव्यूम जेतले फॉर्मेशन हबो कोन हे जिवो ए टाइप रो गोटे गैमेट आसी पारे एंड ये गोटे गैमेट रो चांसेस अछि सिमिलरली मेल केस रे स्पर्म रो कैरियोटाइप कोन हेबो एक्स हे पारे एंड वाई हे पारे ओके तो तमे कोन करिवो एक्ससी एक्स को कंबाइन करिवो कोन होची देखिवो तापर एक्ससी एक्स को कंबाइन करिवो कोन होची देखिवो देन एक्ससी वाई एंड एक्ससी वाई एठी हम कोन देखले चारोटी रिजल्ट आसिला माने फोर टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी फॉर्मड देखि पड़थो त माने कैरियर डॉटर ए कैरियर टाइप हम टिके आगर डिस्कस करले जोठी गोटी एक्स रे कलर ब्लाइंडनेस जीन थी बता हम कोन कहबा कैरियर फीमेल बोली कहबा बा कैरियर डॉटर बोली कहबा बट जतेबेले गोटी एक्स क्रोमोसोम रे जदि कलर ब्लाइंड जीन रहउची मेल केस रे हम ताको पीजीजीडी बोली कहबा एठी तो माने को सो करैतिली एगुड़ा को मन रखिबा बहुत जरूरी ए पांचटी टर्म को मन रखिबा पड़िबो जदि खाली एक्स एक्स रहिला नॉर्मल एक्स सी रहइबो कैरियर एक्स सी रहिले डिजीज ए विषय तुम मान को पूरा बाय हार्ट करबा को पड़िबो ओके तो एठी तुम माने देखि परथो क्लियरली जे गोटे एक्स क्रोमोसोम रे कलर ब्लाइंडनेस जीन अछि तेनो आपण कोन कहबा कैरियर डॉटर कहबा बिकॉज़ कैरियर डॉटर कैरियोटाइप एक्स जदि दुटा जाको एक्स हे जिवो कलर ब्लाइंडनेस हे जिवो ओके तो सेति पई ये कोन हेबो कैरियर डॉटर सिमिलरली एठी कोन हला कलर ब्लाइंडनेस भी हला कलर ब्लाइंडनेस मेल हला सो 50% कलर ब्लाइंडनेस एंड 50% नॉर्मल बिकॉज़ दे आर नॉर्मल एमाने कैरियर हेले भी नॉर्मल एमाने डिस्टिंग्विश करि परिबे कलर को ओके कैरियर हेले भी नॉर्मल बट एमाने डिस्टिंग्विश करि परिबे ना ओके एमाने कलर ब्लाइंडनेस डिजीज्ड पर्सन सो सेति पई डिस्टिंग्विश कलर करि परिबे नाही तो रिजल्ट कोन आसला देखो among the offspring daughters are of normal type but carrier daughter गुडा कोन रे normal but carrier माने नॉर्मल रहिबे कलर को डिस्टिंग्विश करि परिबे बट दे आर कैरियर मींस माने कोन करिवे एक्स क्रोमोसोम पुनी थरे इनहेरिट करि परिबे जतेबेले पुनी मानकर मैटिंग हबो एथरो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हेबार चांसेस अछि ओके तन करी आपको कैरियर बोली कहा जाय सो among the offspring daughters are of normal type but carrier and sons are of color blind type ओके एठी तमे पनेट स्क्वायर भी देखि परिबो पनेट स्क्वायर हमें करितिले चेकर बोर्ड जहा को कहा जाय एठी मेल रो नि जिवो ओके सॉरी एठी फीमेल रो नि हेछि हॉरिजॉन्टल रो रे एक्स सी एंड एठी मेल रो नि हेछि ओके जतेबेले एक्स सी कंबाइन हला एक्स सी कैरियर गर्ल एंड एठी भी कैरियर गर्ल रहबो बिकॉज़ एक्स ओके एंड एठी को हेबो वाई एक्स सी वाई हला कलर ब्लाइंड बॉय एंड एठी को हेबो एक्स सी वाई कलर ब्लाइंड बॉय तो तुमको एतिकी लिखिबा को पड़ी फर्स्ट केस रे रिजल्ट सह लिखिबा को पड़ी ओके so color blind women when cross with normal men the results will be half of the or you can say the all the females are normal type but carrier and males are color blind type okay next second case हम discuss करिवा कोला चुप when a color blind male marries a normal female जेतले गोटे कलर ब्लाइंड मेल नॉर्मल फीमेल सहित मेरी करिवो देन केमिति इनहेरिट हबो सी सेक्स लिंक्ड जीन गुडा को से विषय डिस्कस करबा एंड यू नो दैट द कैरियोटाइप्स ऑफ नॉर्मल मेल इज सॉरी कलर ब्लाइंड मेल इज XCY कलर ब्लाइंड मेल रो कैरियोटाइप कोन रे XCY एंड नॉर्मल फीमेल रो कैरियोटाइप XX तो एमान के भितरे जदि हम क्रॉस करैबा देन व्हाट आर द गैमेट्स कोन हो फर्स्ट गोटे XC हे पारे स्पर्म रो कैरियोटाइप ओके हैप्लॉइड स्पर्म जो अछि तार कैरियोटाइप कोन हे पारे XC हे पारे माने क्रोमोसोम नंबर तन को XC हे पारे किंबा Y हे पारे एंड नॉर्मल फीमेल रो कोन हेबो X दुईटा ओव्यूम जो फॉर्मेशन हेबो तो ओव्यूम रो कैरियोटाइप X होबो एंड आ गोटे भी X होबो ओके जेतेबेले एही स्पर्म एही ओव्यूम सहित फर्टिलाइज ओके जेतेबेले एही स्पर्म एही ओव्यूम सहित फ्यूज हला देन कोन फॉर्मेशन होबो रे XC जाइगोट फॉर्मेशन होबो बा जो डॉटर फॉर्मेशन होबो XC ओके
एंड जते बेले एही स्पर्म एक्स ओव्यूम सहित फ्यूज हो देन कोन हेबो एक्स एक्स फॉर्मेशन होबो सिमिलरली जते बेले वाई स्पर्म मान जो स्पर्म रो कैरियोटाइप वाई अछि सी जते बेले एक्स सहित फ्यूज होबो एक्स वाई फॉर्मेशन हेबो एंड पुणी जते बेले एक्स सहित फ्यूज होबो एक्स वाई जाइगोट फॉर्मेशन होबो ओके या पे हम चेकर बोर्ड भी ड्रा करिवा चेकर बोर्ड केमिति होबो देखो फीमेल पई ऊपर निया जायछि sorry male ପାଇଁ ଉପରେ ନିଆଯାଇଛି XC and Y. XC is the karyotype of the sperm and Y also the karyotype of the sperm because there are two types of karyotypes of the sperm formed XC and Y. And female कौन हेबो X and X. okay तो जेतेबेले ए sperm and ovum fuse हेबो XCX and जेतेबेले XY fuse हेबे XY zygote formation हेबो similarly it will be XCX and XY zygote formation okay so our result कौन आसीबो रे all sons are normal all sons are normal and the daughters are normal but carrier of the disorder okay it कौन देखि परछ तम माने son गुडा को सब normal आसीबे because normal रो karyotype होचे XY okay and daughter गुडा को कौन हेले सब normal but carrier because दुईटा जाक जदि सी ही थांता एक्ससी एक्ससी ही थांता आमे तो कोन कहि थांते आमे ताको कोन कहि थांते के कहि परिबो एक्ससी एक्ससी जदि थांता कलर ब्लाइंड Disease. डॉटर बोली डिजीज्ड डॉटर बोली कहि थांते ओके बुझा पड़ला समस्त को तो आमे एबे दुईटा केस विषय डिस्कस करले फर्स्ट केस रे कोन नेले नॉर्मल मेल मैरिज टू कलर ब्लाइंड फीमेल ओके नॉर्मल मेल मैरिज टू ए कलर ब्लाइंड फीमेल सेकंड केस रे हम कौन डिस्कस करले कलर ब्लाइंड मेल मैरिज टू ए नॉर्मल कलर ब्लाइंड मेल मैरिज टू ए नॉर्मल फीमेल सो एबे आ गोटे केस हम डिस्कस करिबा बट तार मु डायग्राम एठी नाही एई स्लाइड रे ही मु मन को शो करेबी ओके तो जते बेले हम थर्ड केस रे कोन नेबा नॉर्मल मेल मैरिज टू ए कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल मैरिज टू ए कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल रो कोन है बरे XY. XY आमे फर्स्ट रे कोन नेतिले कलर ब्लाइंड ओमेन नेतिले ओके तो एबे कोन नबा नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल ओके नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल तो नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल मते को नॉर्मल मेल रो कैरियर टाइप कोन जदि को नॉर्मल मेल रो कैरियर टाइप कोन XY हबो तो मैं इटे XY लिखुची ओके ये नॉर्मल ओके बुझा पड़छ तो समस्त को नॉर्मल मेल रो कैरियोटाइप कोन हेबो कोन काई की XY. XY तो नॉर्मल मेल से हम कोन करिबा कैरियर फीमेल को क्रॉस करेबा तो कैरियर फीमेल रो कोन हेबो XC XCH. ओके तो कुह इठी कोन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रो कैरियोटाइप कोन हेबो X and Y ओके X and Y तो मैं इठी पुनी थोड़ा मेंशन करूची कलर चेंज करूची तो ये ही जो XY एंड ये कौन हेबो XC X तो एथ्रु जो स्पर्म फॉर्मेशन हेबो तार कैरियोटाइप कौन हेबो X हेबो एंड Y हेबो ओके X हेबो एंड Y एंड एथु कौन हेबो XC एंड X ओके XC एंड X बुझी परछो समस्ते X गोटे हला देखो मेल रो कैरियोटाइप होची XY सेठु जो स्पर्म फॉर्मेशन हेबो तार कैरियोटाइप कोन हेबो रे X ही पारे आ Y ही पारे सिमिलरली फीमेल कैरियर फीमेल रो कैरियोटाइप कोन XCX तो यार कैरियर ओव्यूम जतले फॉर्मेशन हेबो कैरियोटाइप कोन हेबो XC ही पारे आ X ही पारे तो फ्यूज कराओ समस्त नोट बाहर करो पाखर जदि रखी जो देन क्रॉस करके देखो कोन हेबो X XC X and XC हबो कि ना एटा गोटे फास्ट सेम रहइबो XC X ही रहइबो बिकॉज़ ये X अछि एंड ओव्यूम केस रे XC अछि ओके सेकंड केस रे कोन हेबो X X हबो एटा XC रहइबोनी X X हबो ओके बिकॉज़ एटू X क्रोमोसोम आसला एंड फीमेल रू भी नॉर्मल X क्रोमोसोम आसी तो एटी X X ही हबो
देन थर्ड ऑफस्प्रिंग कौन हेबो देखो y क्रोमोसोम विथ XC तो XC y हेबो XC y एंड एटू y क्रोमोसोम x क्रोमोसोम तो नॉर्मल XY ही हेबो तो एठी तो माने कोन देखलो रिजल्ट 50% नॉर्मल एंड 50% कलर ब्लाइंड 50% नॉर्मल एंड 50% कलर ब्लाइंड हैला कि नहीं बुझा पड़ला समस्त को 50% नॉर्मल एंड 50% कलर ब्लाइंड एथिरे तो मन देखुतबो सन 50% नॉर्मल एंड कलर ब्लाइंड माने 50% गोटे देखो ये पुन थरे कहूची जो सन दुई टाइप रो फॉर्मेशन हले गोटे कलर ब्लाइंड ही पारे और नॉर्मल ही पारे सिमिलरली फीमेल भी कौन हेले नॉर्मल एंड कलर ब्लाइंड क्रॉस करके देखो बुझा पड़ी जीवो नोट बाहर करो पेन बाहर करो एगोटा को प्रैक्टिस करबा दरकार मैथमेटिक्स टाइप रो तो क्रॉस जते बेले करिवो तम माने भी जानि परिवो खाली तम मान को कैरियर टाइप मन रखियो को पड़िबो जे XC X थिले कोन हेबो XX थिले कोन हेबो एगोटा को मन रखियो को पड़िबो ओके समस्तंकर आसिला क्रॉस करिलो अनम्यूट करके रेस्पॉन्स करो फास्ट बिकॉज़ एको जानिबा दरकार तम माने बुझी पड़तो कि नहीं हाँ सर नोट एंड पेन बाहर करके क्रॉस करो जानि परिबो ओके हाँ हाँ सिमिलरली एबे आउ गोटे हम पढ़िबा केस 3 बुझा पड़ला समस्त को केस 3 रे कोन आसला क्रॉस गोडा को मते ए जो ऑफस्प्रिंग रो कैरियोटाइप कोन आसला को जल्दी जल्दी जे जे क्रॉस करी छ जल्दी जल्दी को व्हाट आर द कैरियोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स केही भी करिनो कि रे क्रॉस XCX X ओके X X X देन Y X आराम से X Y गोटे गोटे को मु गोटे गोटे पचर फर्स्ट XCX देन X Y XY आसिला ओके नेक्स्ट X C भल से को पूरा कहो XC X अरे समस्ते मो 2 मिनिट तो मान को टाइम दोची जल्दी क्रॉस करो कौन नहीं थिले कंडीशन आमे थी नॉर्मल मेल मैरिज टू कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल रो XY हेबो ओके एंड कैरियर फीमेल रो XC X हबो जल्दी क्रॉस करके को कौन आसी ऑफस्प्रिंग रो कैरियर टाइप क्विक XY XC X नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल आसिला जहार आंसर आसला जल्दी कहो ओके जे बुझी पारु न देखो एटा हम कोन नैथिले XY नॉर्मल नैथिले एंड XC X कैरियर नैथिले माने मेल को नॉर्मल एंड फीमेल को कैरियर नैथिले जे बुझी पारु न देखो रे तो देखो एठी हम कोन करिबा जो स्पर्म फॉर्मेशन होला मेल थारु कोन कोन हेबो X एंड Y दुई टाइप रो कैरियोटाइप रो स्पर्म फॉर्मेशन होला ओटे स्पर्म रो कैरियोटाइप X ही पारे आ अदर टाइप रो स्पर्म्स रो कैरियोटाइप Y ही पारे ओके सिमिलरली फीमेल रो जो ओव्यूम प्रोड्यूस होउची गोटे टाइप रो ओव्यूम रे XC हे पारे कैरियोटाइप एंड आ गोटाय रो नॉर्मल X हे पारे तो एमान को भीतर जतला हम क्रॉस करिबा स्पर्म X स्पर्म जते बेले XC ओव्यूम सहित फ्यूज होला ओके X स्पर्म जते बेले XC ओव्यूम सहित फ्यूज होला कोन फॉर्मेशन हबो XXC फॉर्मेशन होला सिमिलरली ए X क्रोमोसोम जते बेले
X ओव्यूम सहित फ्यूज होला देन XX ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होला सिमिलरली जतबेले Y XC सहित फ्यूज होला XCY एंड Y जतबेले X सहित फ्यूज होला XY ओके तो समस्तंकर एई चारि टाइप रो कैरियोटाइप आसिला कि नहीं देखो जल्दी कहो हाँ सर आसिला समस्तंकर एबे मते कहो XX3 ये कैरियर हबो कि नॉर्मल हेबो कि कोन हेबो जल्दी कहो XXC ये फीमेल हेबो कि मेल हेबो फर्स्ट कहलो फीमेल फीमेल बिकॉज़ बोथ क्रोमोसोम्स आर X क्रोमोसोम तेनु फीमेल हेबो फीमेल नॉर्मल हेबो कि कैरियर हेबो कैरियर सर बिकॉज़ गोटे कैरियर X फीमेल क्रोमोसोम रे C होती तेनु कैरियर Carrier. फीमेल हेबो सेकंड केस रे XX होती कोन मेल हेबो कि फीमेल हेबो फीमेल 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 आ नॉर्मल हेबो कि कैरियर हेबो नॉर्मल नॉर्मल ओके थर्ड केस रे कोन हेबो कहो XCY मेल हेबो मेल कि फीमेल हेबो फर्स्ट कहो मेल मेल नॉर्मल हेबो कि डिजीज्ड मेल डिजीज्ड देन लास्ट केस XY कोन हेबो मेल ना मेल फीमेल मेल 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 तो नॉर्मल एथरो त माने कोन देखुचो ए जो दुई टाइप रो डॉटर फॉर्मेशन हल गोटे कैरियर आ नॉर्मल ओके सिमिलरली दुई टाइप रो मेल भी फॉर्मेशन हल गोटे डिजीज्ड आ गोटे टाइप रो नॉर्मल ओके so 50% of son are normal and 50% are color blind हम जदी टोटल son को 100% होबा तेथरो 50% color blind आसीबे आ 50% नॉर्मल आसीबे सिमिलरली जदी टोटल डॉटर को 100% होबा तेथरो 50% कैरियर एंड 50% नॉर्मल आसीबे ओके बुझा पड़ला समस्त को क्रॉस केमिति करा जाय कोन करा जाय यस सर ओके एंड तुम मानकर होमवर्क होची मते करी की ग्रुप रे सेंड करिवो नोट करो डिजीज्ड मेल मैरिज ए कैरियर फीमेल डिजीज्ड मेल मैरिज टू ए कैरियर फीमेल लिखिलो आउथर सर डिजीज्ड मेल मैरिज टू कैरियर फीमेल क्रॉस करी की मते क्रॉस पठेबो हला लिखिलो डिजीज्ड मेल मैरिज टू ए कैरियर फीमेल एंड सेकंड होमवर्क इज डिजीज्ड मेल मैरिज टू डिजीज्ड फीमेल पुणी थरे कहि दउची फर्स्ट होमवर्क डिजीज्ड मेल मैरिज टू कैरियर फीमेल ओके सेकंड होमवर्क होची डिजीज्ड मेल मैरिज ए डिजीज्ड फीमेल दुई जण जाको डिजीज्ड मेल फीमेल डिजीज्ड ओके यार क्रॉस करी की रिजल्ट भी लेखि की मते ग्रुप रे शेयर करिवो ओके तो थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर ओके थैंक यू सर सर बंद कर देबी हेलो